Good morning, dear students. In last lecture, we have discussed an important examples of limiting molar conductivity and molar conductivity, resistivity, resistance. These are the various types of numericals which we have studied in our last lecture. Now, in today's lecture, we will discuss a last and important topic of this chapter, which is Kohlrausch principle. What is this Kohlrausch principle? Now we will study this important point. But before starting this question, first of all, I will introduce this question and the introduction of this chapter. Introduction to this question. Just see. We know that there are two types of electrolytes: strong electrolytes and weak electrolytes. If we want to understand limiting molar conductivity of strong electrolyte, then we will draw a graph between lambda m versus root c. I think all the students should remember this important point. So if we want to measure limiting molar conductivity of strong electrolyte, then we will draw a graph between lambda m versus root c. And the intercept of this plot is known as lambda 0m, means limiting molar conductivity. Is it clear? For strong electrolyte, lambda m versus root c is a straight line plot, so we can easily determine lambda 0m. But for weak electrolyte, if we will draw a graph between lambda m and root c, the graph or the plot will curve, so we cannot determine intercept of this weak electrolyte because it is not a straight line graph. So due to this reason, we cannot determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte with the help of lambda m versus root c. But just hear me carefully. If we want to find lambda 0m for weak electrolyte, we will apply dissociation constant theory, means Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, and alpha is equal to lambda m upon lambda 0m. So with the help of this formula, we can easily determine the limiting molar conductivity of weak electrolytes. But Kohlrausch gives an important principle that if we want to find limiting molar conductivity without Ka, then what is the formula and what is the way behind this? Now we will study this important point. Again I repeat my words कि अगर हम limiting molar conductivity weak electrolytes के लिए प्रूफ करना चाहते हैं, पर हम Ka का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये कोलरॉश नाम के साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया हुआ है। कोलरॉश ने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्टडी किया। सो द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स by Kohlrausch is here, because we know that for strong electrolyte the plot will be straight line, then we can easily determine the limiting molar conductivity. Okay, just see the difference between limiting molar conductivity of KCl and NaCl, difference between limiting molar conductivity of KBr and NaBr, difference between limiting molar conductivity of Ki and Nai would be the same. It is 23.4 Siemens centimeter square mole inverse. This is very strange that the difference between the strong electrolytes are same. Strange and important point, but what is the conclusion behind this? Just see the second view of Kohlrausch. NaBr minus NaCl, KBr minus KCl. Again, the difference between these two electrolytes is same. The answer is 1.8 Siemens centimeter square mole inverse. So, according to Kohlrausch,
the difference between the strong electrolytes are the same. So Kohlrausch proved an important statement behind this. Just see this statement. The limiting molar conductivity is sum of limiting molar conductivity of positive and negative ion. Just see in this example, ions are same: Cl, Cl, Br, Br, I, sodium, sodium, potassium, potassium. That means molar conductivity is depends upon ion. It is very simple, because in electrolysis process, when the ion becomes ionized, ion will ionize, then electrolysis will possible. So electrolysis process is purely depends upon ionization. So Kohlrausch decide this important point that the limiting molar conductivity of a compound is sum of limiting molar conductivity of positive and negative ion. The example is here that NaCl is equal to Na plus Cl minus. Lambda 0 NaCl is equal to Na plus Cl minus. Now I am writing here small lambda because it is the ionization of a compound. So this is the rule which is explained by Kohlrausch, that the limiting molar conductivity of a substance is the sum of limiting molar conductivity of their positive and negative ion. So I will explain you again with the help of an important example, that if we want to find limiting molar conductivity of CH3COOH, अगर हम CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना चाहते हैं, पर हम Ka का यूज नहीं करना चाहते हैं और हमें ग्राफ से ही फाइंड करनी है, तो हमें मालूम है कि इसका ग्राफ तो कर्व चलाने वाला है, तो इससे तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए, फिर भी अगर हमको ये फाइंड करना है तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। CH3COOH का आयोनाइजेशन क्या होता है? देखिए, CH3COO माइनस प्लस H प्लस क्या आयोनाइजेशन होता है? यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करता हूँ। CH3COO Na, HCl, NaCl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका प्लॉट स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा, इसीलिए इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ से मिल सकेगी, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, CH3COOH, ये ले लेता हूँ CH3COO, इसमें मैं HCl ऐड करता हूँ और NaCl को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ। देखिए, HCl ऐड किया, NaCl सब्सट्रैक्ट किया, ये तो अपने माइंड से डिसाइड करना है, या माइनस प्लस भी हो सकता है, आप देख लीजिए, अंत में आपको पता चल जाए कि मैंने इसका कैसा क्यों किया है। इसकी मैं आयोनाइजेशन कर देता हूँ। चलिए, CH3COO माइनस अकॉर्डिंग टू कोलरॉश प्रिंसिपल, Na प्लस, ये रहा H प्लस, ये रहा Cl माइनस, ये रहा Na प्लस और ये रहा Cl माइनस। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ये CH3COO माइनस, ये रहा Na प्लस, ये रहा H प्लस, ये रहा Cl माइनस, ये रहा Na प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये रहा Cl माइनस, Cl माइनस बोथ साइड से कैंसिल, Na प्लस यहाँ पर से कैंसिल, ये आंसर आ गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस। देखिए, यहाँ पर जो आंसर था वही आंसर मिल गया ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम CH3COO की वैल्यू ले लेंगे, उसमें HCl की वैल्यू ऐड कर देंगे और इसमें से NaCl सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट कोलरॉश का रूल। अगर सीधा ही हम
ग्राफ की वजह से ग्राफ को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके भी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद द हेल्प ऑफ द different type of values of strong electrolytes. Okay, now the next example is here, textbook example 3.8. Here the values of NaCl, HCl, this is NaOAC means CH3COONA, AC means acetate. Lambda 0Ms are respectively here 126.4, 425.991. Calculate lambda 0M of HAC. HAC means CH3 COOH. How can we find this? Just see here. Lambda 0 CH3 COONA. इसका कीजिए आप एडिशन, इसमें से आप कीजिए सब्सट्रैक्शन CH3 COONA. इस दोनों का एडिशन, इसमें से वो माइनस करना है. अगर आपको ऐसा लगता है मैं यहाँ माइनस करूँ यहाँ प्लस करूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ये आंसर लाना चाहिए. ये आंसर लाने के लिए यही मेथड का यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस से ही होगा. अभी देखिए CH3 COONA की वैल्यू कौन सी है, तो ये है 91. HCl की क्या है 425.9 और CH3 COONA नहीं, पर यहाँ पर मैं लिखूंगा NaCl, यहाँ पर रहेगा NaCl. NaCl की वैल्यू कौन सी है, तो वो है 126.4. इसका सब्सट्रैक्शन वगैरह कर देंगे, आंसर आएगा 390.5 सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये रहा हमारे पास lambda 0M CH3 COOH के लिए जो फाइंड करना है, ये हम इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कोलरोश का रूल और उसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर हमने रख दी. सो अकॉर्डिंग टू कोलरोश दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ डिफरेंट limiting molar conductivity of their positive and negative ion. This rule, the introduction of this question is here, that if we want to find limiting molar conductivity of weak electrolytes with the help of graph, then we have to use this method. So this is the Kohlrausch principle, and this is the applications, means the use of Kohlrausch principle, that if we cannot know the unknown value of weak electrolytes, then with the help of strong electrolyte we can easily find the values of strong electrolytes. So this is the Kohlrausch important rule. Just see, एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट था, इसका मतलब कि ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होने जा रहा है. ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, पर मैं अभी चैप्टर खत्म नहीं करूँगा. इसके थोड़े डिफरेंट MCQs और कितने ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं मैं आपको सोल्व करवाऊंगा. उसके बाद मैं चैप्टर खत्म करूंगा. उसके बाद हम MCQ की प्रैक्टिस वगैरह भी डेप्थ में देख लेंगे, और इस तरीके का इश्यूज, इस तरीके का क्वेश्चंस जो लास्ट क्वेश्चंस था आपको अच्छी तरीके से देख लेना है. देख लीजिए क्वेश्चन, में इसकी इमेज लेके आप सबको भेज देता हूँ. थैंक यू, आज के लिए इतना ही.